ऑफ ऑल, जब भी आप लोग किसी भी सप्लायर या किसी भी ब्रांड के वेबसाइट में आते हो तो अपने लिए आप लोगों ने जो है ना टेक्स्ट नाउ का नंबर परचेज करना होगा। क्या कॉल किस चीज पे आप लोगों ने मिलानी है? कॉल। मैं यहाँ चैट सेक्शन में आपको लिख लेता हूँ, टेक्स्ट नाउ न्यूमीरो, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो, वाई की, स्काइप। ये 4 प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने लिए जो है ना नंबर, यूएसए का नंबर परचेस कर सकते हो, और यही नंबर यूज करके आप यूएस के ब्रांड्स के साथ, यूके कनाडा के ब्रांड के साथ कॉल पे बात कर सकते हो। मैं टेक्स्ट नाउ भी यूज करता हूँ, न्यूमिरो भी यूज किया है, वाई की भी यूज किया है, स्काइप भी यूज किया। करंटली मैं टेक्स्ट नाउ यूज करूँ। पाकिस्तानी जीमेल और पाकिस्तानी आईपी से जो है ना अब करंटली सिर्फ और सिर्फ वाई की ही परचेज होती है। वाई की पेड है, स्काइप भी पेड है, न्यूमीरो भी पेड है, टेक्स्ट नाउ फ्री है। टेक्स्ट नाउ फ्री है, लेकिन पाकिस्तानी डिटेल पे नहीं बन रहा। आप लोग यूट्यूब की छोटी सी वीडियो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपका कोई यूएसए में हो या कोई दुबई में हो, पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में भी हो ना, आप उसे कहो वो आपके लिए बना लेगा। उसको उस वीडियो का लिंक सेंड कर लो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कॉल मिलाता हूँ, आप लोग के लिए कि कॉल लगता है कि नहीं। हाँ, जब भी कॉल मिलाते हो प्रोडक्ट सामने रखा करो। हेलो, हाउ आर यू मैम? I am good, ma'am. I have just visited your website and looking to your products. I really impressed from your website, and I wish to place an order of one of your product. And I have just opened your products on Amazon as well because I am Amazon seller from the last 5 years and selling multiple brands on Amazon. And now I'm interested in human end brands as well. So could you please send me the quotation and the price list of this product, like the human end super beats blood pressure support 60 choose product. So do you have any price list or quotation list so I can briefly understand the wholesale prices of your products and place an order in bulk quantity? Okay, sir, I understand this information. But the reason is that at the moment, unfortunately, sir, we are not doing wholesale accounts. Okay. Yes, Okay. we are not doing. Okay. Do you have any exclusivity offer? Like in your products on Amazon, there are a lot of sellers. Like I have just visited your products on Amazon. There are some new sellers and they are selling your products on Amazon. If these new sellers sell your products, so I might be sell your products on Amazon as well because I have a portfolio on Amazon. I am selling multiple brands on Amazon. Like I have exclusivity of Fightage Lab. I have exclusivity of MCJ tools and multiple brands as well. I have my own brands as well. So I think I would be do better business in your products on Amazon and other platform. So if you have any exclusivity deals, so I don't have any problems of investment because we have a huge amount of investment. We have multiple companies in USA. We have subsidiaries in USA. So if you guys have any exclusivity deals, so I am ready to place a bulk order with you guys as well. Definitely go ahead and escalate this because, like, for example, the promotions that we run are, like, for example, the ones that you receive on email. But, like, for example, it's like the biggest bundle we can purchase is a quantity of 6. Quantity of 6. Okay. Yes, that is correct. Mm-hmm. That's the biggest that we can. And I could definitely go ahead and like notate this down and escalate it. But as I was trying to do at the moment, unfortunately, we're not doing new those accounts. So might but I could definitely collect your information. Okay, so might be the sellers that exist in your products, like these are 30 sellers in your products, and there are some new sellers, some like you can say kit sellers on your listing as well. So is there a possibility that these sellers have purchased these human end products of Super Beat 60 Choose products from your wholesaler, your authorized wholesaler, or your authorized distributor? Is there any possibility so we can do business with your authorized wholesaler or distributor? That's information that unfortunately I will not have. But I could definitely collect your information and escalate this. Okay, that's good.
but we are really wish to place a big order and bulk order. Like I already said that we don't have any problem of investment. We can do $1 million of investment with you guys. If there is an possibility of a Zoom meeting, so I want to and I wish to have a Zoom meeting with your boss and whatever you have, sales manager or purchasing manager, so I can arrange a Zoom meeting as well, because we have a company. I can also engage my team member in your Zoom meeting as well. So is there any possibility of a Zoom meeting so we can discuss things more clearly? Well, as I was trying to user all these requests, I could definitely go ahead and notate them down and escalate it. So The reason is that I don't have like a Zoom ID number. okay, no problem. No problem, no problem. Is there any department of your in your brands, in is there any department of a sales department like our purchasing department, and they have any specific email address so I can contact them directly, or they have any phone number so we can contact them directly? And we have also our physical addresses and physical companies in USA. Like I have my own companies in California, we have our own companies in Virginia, in Texas as well. So if there is any possibility of physical meetup, so my team member and my colleague will also go to your warehouse or your office, whatever you guys have, the working space. We can meet them and we can do discuss things more clearly physically or Zoom on Zoom as well. So we can definitely go ahead. I can definitely provide you with this email and its info. Okay, info. Okay, just give me a second. Info Human at human dot com. human double N or single N? Double N. Okay. So HMANN. Okay. Okay. Info at human.com, right? This is your email address. And this email address is belongs to your which departments? Yes, sir. In which department this email address is belong? Is your sales department email address or okay, okay. Okay, I will definitely contact you on email address, and I wish to have a Zoom meeting and discuss things clearly on Zoom or whatever the Google Meet you have. Okay, thank you so much for your time. Take care. Have a good day. My pleasure. Thank you, sir. I really hope you have an excellent day. Bye bye. Bye bye. अच्छा, तो अब आपको समझ आ गई चीजों की? जी सर, आगे समझ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं? स्टार्ट में मैं आपको एक होलसेलर बताता हूँ ना, एक होलसेलर, उसका नाम है शिपर। इसको मैं जब अमेजोन पे मैंने स्टार्ट में काम स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट टाइम, तकरीबन ये 2019 की बात है, इन लोगों को मैंने कॉल मिलाई थी। क्या आप लोग आज ट्राई कर लो, ये इसका फोन नंबर है, आप लोग जरा आज इसको कॉल मिलाओ। मुझे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन इस सप्लायर की वेबसाइट से मिला था। ट्रस्ट में उस टाइम मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी कि मैं इनको अपना ईमेल एड्रेस बता सकता, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती थी। जब ये लोग जो है ना, इन लोगों ने मुझे मेरी कॉल पिक कर ली, तो ये लोग समझ गए कि यार ये ई कॉमर्स का सेलर है। मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग जब आपको रिजेक्ट करते हैं ना, तो वो आपको किस तरीके से भी फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? अगर वो आपको एक दफा रिजेक्ट करे तो उसको दोबारा कॉल ना मिलाओ। मैंने आपको बताया था मार्केट में इस टाइम 1.5 मिलियन ब्रांड्स मौजूद है यार। अगर आप इसके 1% के साथ भी काम करोगे, ये 15,000 ब्रांड्स बनते हैं। पर्सनली मैंने अपने इस 4 साल की एक्सपीरियंस में जो है ना, 15,000 ब्रांड्स को अप्रोच नहीं किया। तो आप लोग फिर किस तरीके से गिला कर सकते हो? समझ आ रही है आप लोगों को? आप लोग कॉल मिलाओ, एक ब्रांड आपको कॉल पे रिजेक्ट करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 100 करेंगे, 1000 ब्रांड्स आपको रिजेक्ट करेंगे। यार एक ब्रांड तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा ना कॉल। अगर वो एक ब्रांड भी आपको एक्सेप्ट कर पाया ना, तो आपकी वो जर्नी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। हार नहीं मानना बस। मैंने जब इसको कॉल मिले, ये लोग मुझे कह रहे थे अगर हम आपके साथ किस तरीके से कांटेक्ट कर ले, तो मैंने इन्हें कहा कि आप लोग मेरे साथ ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर ले, कुछ उर्दू कुछ इंग्लिश, कुछ उर्दू कुछ इंग्लिश, बस किसी तरीके से मैंने उसको अपनी ये बात समझाई। फिर इन लोगों ने कहा कि अपना ईमेल एड्रेस दो, हम आपको रिटर्न में ये सारे चीज बताते हैं, आप उसको जो है ना गूगल ट्रांसलेट कर लो और अपने जुबान में उसको जो है ना समझ लो, फिर हमें रिप्लाई दे दो। ये लोग मुझे खुद बता रहे थे उस टाइम, 2019 की बात है ये।
राइट, समझ आ रही है आपको? सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपको वो इतना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। वो लोग बैठे ही इसलिए कि एक बंदा आएगा और हमसे 1000 2000 3000 डॉलर की परचेजिंग करेगा। इतना तो वो आपके लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कि आप अपने माइंड में ये रखो कि वो लोग मेरे लिए बैठे हैं और मैं अगर जाऊंगा तो मैं वो मुझसे कुछ चीज बेच पाएंगे। लेट सपोज आपका कोई दुकान है, आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपको उर्दू आती है और उसको जो है ना पुश्तो आती है, तो आप किसी तरीके से उसकी पुश्तो भी समझ जाओगे, लेकिन फिर भी उसको अपना वो प्रोडक्ट सेल कराओगे। इसी तरह लोग करते हैं कि नहीं? समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप लोगों ने भी जो है ना अपनी बात उसको समझानी है कि यार मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात सुनी कि नहीं? अब आप लोग ऐसी बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन समझ तो गए हो ना कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर। उसने मुझे डायरेक्ट बताया कि हमारी कोई होलसेल की अपॉर्चुनिटी नहीं और हम आजकल होलसेल अकाउंट अप्रूव नहीं करें। तो मैंने दूसरी बात क्या बताई कि ओके, अगर आप लोग की होलसेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं आपके साथ 50 में जा सकता हूँ। जैसे ही मैंने उसको जो है ना मैंने कहा कि मेरे पास $1 million ऑफ इन्वेस्टमेंट है और मैं आपके साथ $1 million की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, राइट? मैंने उन्हें यही बताया ना कि मैं आपके साथ $1 million ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। फिर उसने खुद मेरे साथ वो बात बढ़ाने की कोशिश की। सुन रहे थे कि नहीं? वो खुद चाह रहा था कि यार अगर इसके पास, और अब $1 million है कहाँ पे? लेट सपोज मैं तो उसके साथ $1 million इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बड़ा ऑर्डर भी प्लेस कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार डॉलर का ऑर्डर प्लेस करूंगा स्टार्ट। लेकिन कन्विंसिंग पावर अपने आप में लेके आओ। अब किस तरीके से कस्टमर को, अपने ब्रांड्स को किस तरीके से कन्विंस करोगे? जितना आपका कन्विंसिंग पावर ज्यादा होगा उतना ही आप इस फील्ड में आगे जाओगे। समझ आ रही है आपको? चलो, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग का फिर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग फिर मुझसे आप लोग का जो पेड बैच ग्रुप बना है ना, कम्युनिटी, वहां पे आप मुझसे पूछ ले। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकते हो। अगर कभी रिप्लाई थोड़ा सा लेट मिले तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन का अपडेट जुल्फिकार भाई आपको दे देगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नया सीखा भी होगा। सो इंशाल्लाह फिर भी नेक्स्ट सेशन में भी इंशाल्लाह ब्रांड्स के ऊपर बात करेंगे। 2-3 सेशन हम ब्रांड्स के ऊपर लेंगे ताकि हमारे ब्रांड्स का जो है ना ये एरिया बहुत स्ट्रांग हो। और जब भी आप किसी भी ब्रांड्स को अप्रोच करो तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।